बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल फारूक चीमा है। मैं सरगोदा से MP हूँ। कल के एतमाद के वोट के हवाले से टीवी और सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ एक गलत खबर चलाई जा रही है कि मैंने शायद जानबूझ के वोट नहीं डाला। मैं इस चीज़ की सख्ती से तरदीद करता हूँ। मेरा तल्लुक PTI से है और PTI से ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, और मैं वतन वापसी पे खुद क़यादत से मिलकर इंशाल्लाह ये चीज़ बात करूंगा। मैंने 15 दिन पहले का अमेरिका का टिकट लिया हुआ था क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे हल्के की जिम्मेदारी है मेरे पे, वैसे ही मेरे फैमिली की भी जिम्मेदारी मेरे पे है। और मैं 2 दिन से लाहौर था, और 2 दिन लाहौर रहने के बाद मेरी चूंकि कल फ्लाइट थी रात की इस्लामाबाद की, और मैं रात को इस्लामाबाद पहुंचा तो रात को मुझे कॉल आई कि वापस लाहौर पहुंचे वोट के लिए। तो मैंने कहा कि मेरा तो इसी तरह मैंने बताया भी था कि मेरी फ्लाइट है, और फिर भी मैंने कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच सका। धुंध बहुत ज्यादा थी और मुझे फिर जाना पड़ा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये चीजें सुन के कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बातें और इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इस्तीफा दिया था पंजाब में, और फिर मेरे बाद कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया था, और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। मैं इंशाल्लाह ताला अभी भी अपनी सीट खान साहब पे कुर्बान करने को तैयार हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं पहले भी इमरान खान साहब के साथ था और आइंदा भी इमरान खान साहब के साथ ही हूँ इंशाल्लाह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM की जानिब से डिलिमिटेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंध हुकूमत ने अचानक गैर मामूली फैसला करते हुए ऐलान किया कि कराची, हैदराबाद और दादू में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला सिंध और बाज़ दीगर वज़रा के मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची की हल्काबंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया। शजील मेमन ने बताया कि इजलास में अहम फैसले हुए हैं। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीली बातचीत हुई। उनका कहना था कि MQM को डिलिमिटेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहते हैं इत्तेहादियों के मुतालिबात को संजीदा लिया जाए। उन्होंने बताया कि कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा रहे हैं। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। अलबत्ता सिंध के बाकी तमाम अजला में इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। शजील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध दादू में सैलाबी पानी के बायस इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुकी है। उनका कहना था कि किसी के सड़क पर आने से बात नहीं मानी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की कि सबको साथ लेकर चलें। वाज़ेह रहे कि धड़ों के इंजमाम के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने गुज़िश्ता रोज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहला बड़ा ऐलान किया और धमकी दी कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन जफर अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को 40 साल के लिए 1% शरह सूद पर कर्ज मिला है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन जफर अली शाह का कहना था कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। आइंदा माह से आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से भी फंड आना शुरू हो जाएंगे। जफर अली शाह का कहना था कि बैंकों ने कर्ज 40 साल के लिए दिया है। कर्ज सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए है और 1% शरह सूद के हिसाब से दिया गया है। सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का कहना था कि हुकूमत सैलाब ज़दगान पर 3 साल के दौरान $8 अरब खर्च करेगी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हुकूमत अब तक $1.5 अरब खर्च कर चुकी है। उनका कहना था कि हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत रवां माली साल के दौरान गिरती शरह नमू कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तान से यूरेनियम से आलूदा एक पैकेज बरतानिया पहुंचने का इंकशाफ कर दिया है। ताहम दफ्तर खारजा ने इस खबर की तरदीद की है। यह पैकेज 29 दिसंबर 2022 को बरतानवी दारुलकुमत लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां मामूल की स्क्रीनिंग के दौरान इसमें यूरेनियम की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पैकेज में बहुत मामूली मिकदार में यूरेनियम थी। ये मालूम नहीं हो सका कि यह पैकेज किसने भेजा। ये ओमान से जाने वाली परवाज के जरिए बरतानिया पहुंचाया गया और तहकीकात में इस पैकेज के पाकिस्तान से रवाना होने का इंकशाफ हो चुका है। ताहम ये ताहाल मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान से ये किसने भेजा। बताया गया है कि इस पैकेज से बराह रास्त किसी शख्स को नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा नहीं था। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। Your Excellency President Miguel Diaz-Canel of Cuba, Your Excellency President of the General Assembly, Your Excellency Secretary General Antonio Guterres, Your Excellency Foreign Minister
Bruno Rodriguez Varela of Cuba, Excellencies, dear colleagues, it is my honor today to transfer the chair of the Group of 77 in China to my dear friend, the Foreign Minister, His Excellency Bruno Rodriguez Varela of Cuba. It is a great honor and a privilege for me and for Pakistan to preside over the group in New York during the past year. I thank the 135 members of the group for reposing their trust and confidence in Pakistan's chairmanship. In these challenging times, I wish to thank the UN Secretary General, Deputy Secretary General, the UNDP Administrator, Under Secretary General UN DESA, and the UN Office of South-South Cooperation and the G77 Secretariat for their support and assistance to Pakistan during the chairmanship of the group. The Group of 77 in China is the largest group within the United Nations. It is a vital stakeholder in the international economic system. It is the principal engaging, propelling positive change in international economic relations to end poverty in all nations and promote greater equality and justice among them. Pakistan has had the privilege to chair the Group of 77 in China 3 times in the past. However, leading the group this year as our nations collectively confronted the perfect storm of multiple external shocks of COVID, climate and conflict was especially challenging and yet rewarding. Our group responded to the polycrises of food, fuel and financial facing developing countries with collective vision, determination and unity. The Group of 77 and China has been proud of its unified and collective response to multiple and cascading crises. The group has led the way in formulating and securing an agreement on the urgent and systemic responses required to overcome these multiple challenges. At the Financing for Development Forum in April, the group secured an agreement on measures for financing recovery from the crises and achieving the SDGs. At the high-level political forum last July, the group collectively negotiated the means of implementation for achieving the SDGs in the current difficult decade of action. At the 77th session of the UN General Assembly, the group was able to secure consensus for action on major economic, financial, development and environmental issues. At COP27, through our mutual and collective endeavors, the group was able to achieve a historic decision for the establishment of the Loss and Damages Fund, and at the ministerial conference of our group last month, we agreed on an outcome document which sets out our positions on the immediate and structural measures that are essential to alleviate the food, fuel and financial crisis confronting our countries, and to reform the global economic architecture in order to achieve the Sustainable Development Goals and implement Agenda 2030 and the Paris and other environmental agreements. These demonstration of the unity of the group and its capacity for collective action are a clear signal that acting together we can achieve the decisions required to overcome the challenges to our development and prosperity which arise from external impacts and an unequal international economic system. To this end, the group must maintain its unity, coordination, and collective action. It must secure implementation of the positions the group has set out in the outcome document adopted last month, including at the SDG Summit, at COP28, and in the several other processes and meetings scheduled in 2023. Some of the actions we have proposed need to be urgently implemented. Debt relief and restructuring for the 60 members of our group who are in debt distress, rechanneling of unutilized SDRs to provide fiscal space and liquidity as needed by over 100 developing countries, food supplies to the 250 million living in hunger, generous financial and other assistance to the countries most vulnerable to climate change to enable them to rebuild from natural disasters and to adopt the ever more frequent and more ferocious climate impacts. Such actions is all the more urgent and essential
since the external economic environment could become even more hostile if the central banks of the major economies continue to raise interest rates, if great power rivalries further constrain trade and investment flows, and if the global economy falls into an extended recession. Excellencies, Pakistan is confident that the Group of 77 in China has the capacity to collectively confront and overcome the mounting external economic challenges and promote more just and equitable international economic order. Our unity is, of course, our greatest asset. This was on full display at COP27. Moreover, unlike the past, today the group has significantly greater capacity for self-help through the ever-enlarging modality of South-South cooperation. Some of our members are now the world's leading economies and offer the model and the market for other developing countries. And we have allies in the global north, those who agree with us that the historic approach of exploitative, unequal growth has damaged the global environment, exacerbated poverty, hunger and disease, and triggered conflicts across the world. We must continue to make a common cause with such conscientious people, organizations and institutions. I am confident that in 2023, under Cuba's able leadership and the guidance of His Excellency Bruno Rodriguez Varela and the Cuban delegation, the Group of 77 in China will respond actively and boldly to our imposing challenges and grasp all available opportunities to advance our common objectives of achieving the SDGs and environmental goals. I wish Cuba every success in guiding the group during the year towards the realization of our common aspirations for a just international economic, social and environmental order. Pakistan will extend its full cooperation in this endeavor and will continue to play an active and positive role as a member of the Group of 77 and China. I thank you. भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी जारी है और चीन ने फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने बताया कि रियासत अरुणाचल प्रदेश के करीब सरहद पर चीनी फौज की तादाद में इजाफा हो गया है, जिस पर हम गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पर कशीदगी है और गैर मुतवक्के सूरत हाल है, मगर हम शुमाली सरहदों पर सूरत हाल को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाली सरहद पर चीन की जानिब से एहलकारों की तैनाती इसी तरीके से जारी है। हमारे पास इतनी ही तादाद में फौज मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ तैनात फौजी चौकस हैं, जो किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी फौज चीन के साथ मेज पर मौजूद 7 मसाइल में से 5 को हल करने में कामयाब रही है और हम फौजी और सिफारती दोनों सतहों पर बात करते रहेंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास काफी ज़खायर हैं। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आए, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आए, सर्दियों के खाबे खाएं।